although Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Aurobindo Ghosh and Bipin Chandra Pal were seen as being part of one camp, there was a lot of difference of opinion between each of them in terms of what would this passive resistance or non-aggressive resistance translate to. We still have no clarity on what is the school or the philosophy from which the UCC will draw its principles. And as long as there is no such clarity, I will never agree to any position where I don't know what I'm signing up for. See, it's not as if the public has lost complete confidence in the judiciary. वरना इतने सारे लोग कोर्ट कचहरी क्यों करते? सवाल थोड़ा डिफरेंट है, which is जब हिंदू समुदाय की बात आती है, तो उन मुद्दों पे जुडिशरी का रवैया क्या होता है? That's the larger question. There was a time when the Dravidian movement wanted to secede from Bharat, saying that the Dravidian identity is a very different identity from the North Indian Aryan identity, entirely based on pseudoscience, hoax. इसका कोई लॉजिक ना बेसिस है, ना हिस्ट्री में, ना साइंस में, ना आर्कियोलॉजी में, ना लिंग्विस्टिक्स में. ये एक पूरा फंडेड मूवमेंट था और आज भी है. इतने सालों के बाद और इतने जनरेशंस के बाद इस कठिनाई से आपने इस भारत का एक भारत का आपने सृष्टिकरण किया है. इसके साथ किसी को भी छेड़छाड़ करने का मौका नहीं मिलना चाहिए. Whether it is the Khalistani movement or the Dravidian movement or the Naga movement or any other movement. So in the context of Bharat, I have clearly said that it is not CRT, it is CRRT, which is critical race and religion theory. When you try to create equality of outcomes, you are playing with something very crucial in life, which is chance. How is passive resistance different from non-aggressive resistance? So you see, passive resistance and non-aggressive resistance were terms used primarily in the context of the extremist and the nationalist factions of the Congress party as it existed then. This is in the early 1900s. And this was the position taken before the Surat split of 1907 and even post that. Now we have to realize that these positions were being adopted primarily because of the tightening of the screws by the British establishment in the context of sedition, so on and so forth. And because they had to continue the activity staying outside the jail, the nationalists chose to adopt a particular strategy where they would remain within the confines of the law, but would continue to perhaps adopt certain mechanisms in terms of boycotts or aggressive promotion of Swadeshi activity. Now here you see, even in the nationalist position, although Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Aurobindo Ghosh and Bipin Chandra Pal were seen as being part of one camp, there was a lot of difference of opinion between each of them in terms of what would this passive resistance or non-aggressive resistance translate to. Bal Gangadhar Tilak effectively had moved to a position where he had said that we should become part of the colonial administrative mechanism, but not to push their agenda, but to stay within that particular imperial legislative council and push the Bharatiya agenda. And in that sense, he effectively moved away from the policy of not becoming part of the colonial establishment altogether. The difference is, the moderate position effectively said, we want to be treated at par with British subjects and therefore we should become elected representatives in the council. Bal Gangadhar Tilak basically took the position, you are not becoming part of the council to be treated as equal subject of the British, but to ask for your rights on a very different level altogether. So that's one. Second, in terms of passive resistance, non-aggressive resistance, one of the finest expositions that I have read is that of Sri Aurobindo Ghosh after his move to Pondicherry. He had written an open letter for which he was persecuted for or prosecuted for sedition, and so to escape British prosecution he moves to Pondicherry, which was a French colony at that point. Now in that letter he clearly says that you must push for autonomy as much as possible, but staying within the bounds of the law,
and taking up non-aggressive resistance to the extent possible. And you have to understand the context of this. He had been released from jail after the Alipur bomb conspiracy case. A lot of the revolutionaries had been jailed or they had been sent to Kalapani, so on and so forth. And therefore he realized that picking up arms was going to be difficult. And the only other way of doing this was use the existing mechanism as much as possible, which was similar to Bal Gangadhar Tilak's position. The difference is, Bal Gangadhar Tilak, after his 6-year imprisonment in Burma, gave up any resort to violent means or the use of aggression in any manner. His previous vocal praise of the Chapekar brothers after their assassination of British officials, he had significantly toned down his particular position, but he had not diluted his core principles. What Sri Aurobindo did was that he gave it as a caveat. He said, adopt this particular position as much as possible. And therefore he effectively left the door open for use of force if it became necessary. So, for all practical purposes, between passive resistance and non-aggressive resistance, there's not too much of a difference. The clear no is stay away from violence as much as possible. And two, for this position to become mainstream political position, you can fight the battle staying in the political arena, because if you become revolutionaries altogether, then you will never acquire political legitimacy. And most importantly, the more you are kept out of policy making, moderates will end up occupying the positions in the Imperial Legislative Council, and therefore for the nationalist factions or the extremist faction to find representation in the Imperial Legislative Council, they must become part of the system. That was the realization. So one of the developments of this was around the end of the Khilafat movement, a new party is formed called the Swaraj Party. And that Swaraj Party, based on the experience of the non-cooperation movement and the experience of the Khilafat movement, decides that Gandhi's policy of non-cooperation effectively meant that the Congress was no more represented in the Legislative Council in the local provinces or at the national level. And in the process, Muslim League was beginning to occupy those positions. So they decided that perhaps Tilak's position made more sense, and using his principles, the Swaraj Party was established to say we will now push our agenda by being part of the system. Why have you expressed negatively about the Uniform Civil Code? Because there is still no clarity on whether the UCC will require compromise on the part of the Hindu community. We still have no clarity on what is the school or the philosophy from which the UCC will draw its principles. And as long as there is no such clarity, I will never agree to any position where I don't know what I'm signing up for. I've given this example before. If someone were to ask me on a piece of blank paper, saying this is the in-principle agreement, but that in-principle agreement is not captured in writing, I will not sign. Similarly, until the amount is mentioned, you don't sign on a blank check. So the concept of UCC needs to be presented in its flesh and blood character so that you know कि इसका नतीजा क्या होगा, इसका असर हमारे अधिकारों पे क्या होगा, हमें कितने समझौते करने पड़ेंगे. जब तक इन प्रश्नों का ठीक से उत्तर नहीं मिलता है, मैं इसको अपोज नहीं कर रहा हूं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरा पोजीशन जो है एग्नोस्टिक है. I will not tilt either way until I know what is the sacrifice to be expected from us. Because I have made this point clear that in the previous governments, it's the Hindu community that has always been expected to make its sacrifices with respect to its traditions. And if the very same sacrifices continue under the new government, then the basic question will be, what is the difference? That means you are unable to convince others to take a particular reformist or a progressive approach until we are convinced in the first place. अब हिंदू इससे ज्यादा और कितना रिफॉर्म होंगे? 50 साल से रिफॉर्म का प्रोजेक्ट है, सिर्फ हमारे साथ हो रहा है 70 साल से, राइट? तो मेरा ये कहना है कि अगर आप में रीढ़ की हड्डी नहीं है किसी और कम्युनिटी को कन्विंस करने के लिए, आप हमें चारा मत बनाइए, क्योंकि हम चारा बहुत बन चुके, अभी आगे नहीं बनेंगे. दैट इज अ वेरी लिमिटेड पोजीशन. ये ना यूसीसी के खिलाफ है ना उसके फेवर में है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब तक एक प्रिंसिपल, एक अधिनियम के तौर पे एक कागज में उसको आप कैप्चर नहीं करते हैं, लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि इसका एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. सीए की जब बात होती है,
आपको पता था कि ये बहुत ही लिमिटेड मुद्दा है, 6 कम्युनिटीज के लोग 3 देशों से आएंगे जो इस्लामिक देश हैं, और क्योंकि वहां पे उनका शोषण हो रहा है तो उनको बचाने के लिए अब यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो आपने जो स्टैंडर्ड 11 साल का वेटिंग पीरियड होता है फॉर एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप, आपने उसको घटा के 6 साल या 5 साल कुछ कर दिया, तो इतना ही उसमें था। यूसीसी का सीधा असर पड़ेगा मैरिज पे, इनहेरिटेंस पे, जनरली रूल्स ऑफ सक्सेशन। ये सारे मुद्दे जो हैं वन पॉइंट एजेंडा नहीं है, इसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस होते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर्स पे इसके असर होते हैं, संप्रदाय पे असर होते हैं। As Hindus, we have had multiple schools of succession across the country. Already उसको घटा के आपने 2 स्कूल ऑफ थॉट, दया भागा मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट, आपने हिंदू सक्सेशन प्रिंसिपल्स में आपने इसको कम कर दिया है। अब इससे ज्यादा हम और कितना कम करेंगे, राइट? अगर कोई मुझसे ये कहेगा कि नहीं गोवा में ऑलरेडी है एग्जांपल यूसीसी का, अरे भाई गोवा में जो यूसीसी आया था वो पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था, आप इसको उदाहरण के तौर पे मत पेश कीजिए, ये ऑलरेडी क्रिश्चियन प्रिंसिपल है ना? So therefore, I am very clear that my position will remain agnostic until I see how it feels, how it smells, and how it reads. That's my clear position. What are the top judicial reforms that you would suggest? See, it's not as if the public has lost complete confidence in the judiciary. वरना इतने सारे लोग कोर्ट कचहरी क्यों करते हैं? सवाल थोड़ा डिफरेंट है, विच इज जब हिंदू समुदाय की बात आती है तो उन मुद्दों पे जुडिशरी का रवैया क्या होता है? दैट्स द लार्जर क्वेश्चन. नाउ दैट क्वेश्चन is not just a question of reform of the system. It is a question of a reform of legal education. It's a question of greater awareness of civilizational history. तो इसका सीधा जो संबंध है शिक्षा के साथ है. That's the first level of response. But the second level is, अगर गवर्नमेंट कोई नीति तय करती है, उसमें हस्तक्षेप करने का जो अधिकार है जुडिशरी के पास कितना होना चाहिए? That's a different question altogether. On that, my first point is, judiciary does and should have the right to interfere to some extent. Okay? However, if every decision of the government is going to be met with a red flag, and if the will of the people can be overturned by unelected people on the grounds of what is defined as constitutional morality, जिसकी जो परिभाषा है वो बदलती रहती है और जिसके मापदंड जो है वो बदलते रहते हैं, तब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पब्लिक ने या रिपब्लिक ने इतना सारा जो अधिकार और इतना सारा पावर जो है जुडिशरी को देनी चाहिए when we created the constitution. Now that is where I think is the issue of how the system is created and how the system appoints its own successors. Perhaps there are very few examples where in a democracy, especially a constitutional democracy with a parliamentary system in place, जहां पे कोई ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जो अपने सक्सेसर्स को अपॉइंट किए जाता है और जिसके पास गवर्नमेंट के डिसीजंस पे हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो सत्ता में नहीं आ पाया वो इस इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करके पूरी तरह से उसके द्वारा रोक लगा सकता है. इसका तो पर्पस नहीं था जुडिशरी का. सो विच इज व्हाई आई थिंक एनजेएसी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, उसको और थोड़े चेंजेस के साथ फिर से पेश करना चाहिए गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर के सामने. एंड ऑब्वियसली एनजेएसी में ओरिजिनल पोजीशन ये भी था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट का से होगा उसमें, both the opposition as well as the government will have some say. तो बैलेंस थोड़ा बहुत उसमें हो जाता है. उसके साथ अब चीफ जस्टिस का भी से होना चाहिए because he is the head of the judiciary in that sense. Then you have perhaps the president, right? I am saying that in principle, the judiciary must not say that there can be no legislative oversight or legislative stakeholdership in appointment of judges. That's one. Second, ये भी थोड़ा कंसिडर करना जरूरी हो जाता है कि जब जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम में करप्शन को लोग मानते हैं कि है,
उसको कैसे एड्रेस किया जाए। अगर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का जो जरिया है, जो प्रोसेस है, वो अपने आप में इतना कठिन हो तो किसके पास इंसेंटिव होगा, राइट? भारत के पूरे इतिहास में, इंडिपेंडेंट इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां पे आप कह सकते हैं हाँ ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि इतने सारे जजेस इम्पीच हुए। करप्शन के केसेस तो हैं या फिर उसकी उसकी बात होती है, लेकिन जब उनको पदवी से निकालने की बात आती है वो बहुत कम होता है, राइट? That clearly shows that this system is not foolproof. So I would want to look at a revisitation of the existing mechanisms, where how do you address corruption or lack of integrity in this sensitive institution? That's 2. 3 is perhaps a slightly more addressable issue. किसी भी प्रैक्टिसिंग सक्सेसफुल वकील के पास इंसेंटिव नहीं है जुडिशरी में जाने का। Why will I give up a great practice to go to the other side, where you make less than what a second year or a third year law firm associate makes? 14 साल की प्रैक्टिस के बाद जो किसी भी वकील का, रीजनेबल वकील का जो अर्निंग होता है, उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जजेस के सैलरी का लिमिट जो होता है वो प्रेसिडेंट के सैलरी का लिमिट होता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता है। तो इसको थोड़ा रिकंसिडर करना पड़ेगा और इसको पीरियडिकली रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केट, इन्फ्लेशन, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से इसको भी बढ़ना पड़ेगा, और ये एक बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है। एंड जब आपके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है कि हर मेजर मुद्दे को न्यूज़पेपर रिपोर्ट करेगी, हेडलाइंस बनते जाते हैं उसमें, राइट? कोई भी आके कोई भी टिप्पणी मार देगा, राइट? When all of these disincentives are there, what is the incentive to become a judge? Nothing, right? Unless you're just saying that job security. वकील को क्या job security चाहिए? If he is good at what he does, he will continue. And this is one of those professions जहां पे उम्र के साथ आपकी वैल्यू जो है बढ़ती ही जाती है। ऐसा नहीं है कि एक्टिंग की तरह एज के बाद आपका जो शेल्फ लाइफ है कम हो जाता है। नो, with age, the older you are and the more experience you have, the greater is your ability to command the commercials in the market. इसके साथ आप कैसे compete करेंगे? ऐसे कितने बच्चे हैं जो लॉ स्कूल जाते हैं जो जजेस बनने के लिए जा रहे हैं, right? Unless you address some of these basic issues, you won't be able to address the larger issue. ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपने सैलरी को इंप्रूव कर दिया तो उसके साथ ऑटोमेटिकली करप्शन कम हो जाएगा, लेकिन बेसिक रियलिटीज को आपको मीट करना पड़ेगा। The rest of the market is functioning on economics, but you expect lawyers and judges to not function on economics. How is that possible? आपका आर्ग्यूमेंट ये थोड़ी हो सकता है राइट टू जस्टिस, ये आर्ग्यूमेंट आप डॉक्टर्स को दे दीजिए फिर, बिकॉज हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन litigation. Ask them to work free of charge. Is that possible? Roads are more important. Ask civil engineers to work free of charge. When the entire economic system is functioning on free market economics, how can you expect one particular profession and one particular institution to survive on kartavya and duty? Not possible. What happens when the sub-identities within Bharat become a threat to Bharat itself? So I don't think flourishing of any sub-identities is a threat to the whole. The assertion of the sub-identities as the identity that must prevail over the larger identity is where the trouble begins. Which means there was a time when the Dravidian movement wanted to secede from Bharat, saying that the Dravidian identity is a very different identity from the North Indian Aryan identity. Entirely based on pseudoscience, hoax. इसका कोई लॉजिक ना बेसिस है, ना हिस्ट्री में, ना साइंस में, ना आर्कियोलॉजी में, ना लिंग्विस्टिक्स में। ये एक पूरा फंडेड मूवमेंट था और आज भी है। तो जब ऐसे आइडेंटिटीज कहती हैं दैट भारतीय आइडेंटिटी से मेरा आइडेंटिटी बड़ा है, देन द इंडियन स्टेट मस्ट व्हील द स्टिक। ये सेडिशन है। और इतने सालों के बाद और इतने जनरेशंस के बाद इस कठिनाई से आपने इस भारत का एक भारत का आपने सृष्टिकरण किया है, इसके साथ किसी को भी छेड़छाड़ करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। एंड वेदर इट इज द खालिस्तानी मूवमेंट और द द्रविडियन मूवमेंट
और द नागा मूवमेंट और एनी अदर मूवमेंट, भारत के अंदर रह के उसके दायरे के अंदर आप अपनी बात को रखिए कि हमारे आइडेंटिटीज को दबाया नहीं जाना चाहिए, हमारे लैंग्वेज को बचाया जाना चाहिए, हमारे स्क्रिप्ट को बचाया जाना चाहिए। एक्सेप्टेड, ये सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे दैट द ओनली वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिटी इज टू कम आउट ऑफ द इंडियन यूनियन, तो इंडियन यूनियन बचेगा कैसे? और हम में से ऐसा कौन सा राज्य है जो अकेले फॉरेन पावर्स का मुकाबला करेगा? भारत एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, पाकिस्तान भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है जिसका वो पूरा फायदा उठा रहा है क्योंकि इट इज एट द क्रॉस रोड्स, राइट? एंड देयरफॉर दिस एरिया हैज ऑलवेज बीन द बैटल ग्राउंड फॉर बिग पावर्स, उनके गेम्स के लिए। हम में से ऐसा कोई भी राज्य या प्रदेश नहीं है जो अपने आप को बचा पाए इंडिपेंडेंटली। बाहर के जितने भी पावर्स हैं, मैं खा जाएंगे। सेकंड, सनातन संस्कृति भारत के रहते ही बची रहेगी, नॉट थ्रू द प्रदेश, क्योंकि भारत प्रदेशों की संस्कृति को बचा सकता है और प्रदेशों की जो संस्कृति है वो उसी धारा से निकलती है। मुझसे बहुत सारे लोग आके ये कहते हैं कि संस्कृत तो मर चुका है, इसको पुनर्जीवित कैसे करें? नहीं, जब तक बाकी सारी भाषाएं हैं तब तक संस्कृत उन भाषाओं से जीवित रहेगी। आप शुद्ध बंगाली बात करके देखिए, उसमें संस्कृत की झलक आपको दिख जाएगी। तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, no language in this country, almost no language in this country, at least the languages which have a significant influence of, how do I put it, Bharatiya Sanskriti in it, the core identity in it, Sanskrit lives through all of that. So, which is why we have always had the concept of Desha Bhasha and Deva Bhasha. Sanskrit is the Deva Bhasha, regional languages are treated as Desha Bhasha. तो ये एक महासागर है जिसके ट्रिब्यूटरीज हम सारे हैं। ट्रिब्यूटरी का जो पानी है वो रिक्त हो जाएगा अगर महासागर नहीं रहेगा तो। That's it. In the context of critical race theory, how do you see the advocacy of equality of outcome over meritocracy? One, critical race theory is not a question that India needs to be concerned with in that particular sense. But you know why it becomes relevant? Because racial superiority of the European civilization is the basis for the creation of the Aryan invasion myth. So in the context of Bharat, I have clearly said that it is not CRT, it is CRRT, which is critical race and religion theory. Because their entire point was that the color, white color of the skin is the color of the victor. विजेता हमेशा गोरा होता है इनके हिसाब से. And that is exactly the basis for the martial, let's say, racist doctrine, which was used to create the British Indian Army. Then you have the Aryan invasion myth. ये सारे जितने भी हैं, they're connected issues. भारत के संदर्भ में the application of the critical race and religion theory is slightly different. It should not be applied in the context of Hindu groups or within Hindu groups. It must be applied in the context of the European institution versus Hindu groups, because that is how they applied against us, and ये अभी भी चल रहा है. Okay. Now, on the question of equality of outcomes and equality of opportunity, when you try to create equality of outcomes, you are playing with something very crucial in life, which is chance, destiny, probability, sheer luck, whatever you call it. उसके साथ आप जितना छेड़छाड़ करेंगे, आप जीवन प्रवाह के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, because chance is the essence of life. A lot of things happens on the basis of coincidence and probability. कौन किस परिवार में पैदा होता है और उसको क्या फैसिलिटीज मिलते हैं, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है. आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि चाहे किसी भी परिवार से आप हो,
एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी से आपको वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन आपकी जो परवरिश है, जो भी है, it will continue to show when the opportunity presents itself. You can't say I will iron out all those inequalities. When you do that, then when someone believes that I come from a background which is not the same as others in terms of privilege, then what is the human tendency? I have to work harder. Right? I'll give you a simple example from my own profession. The legal profession, ऐसे बहुत सारे लॉयर्स हैं जो थर्ड या फोर्थ जनरेशन वकील होंगे, एंड बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो फर्स्ट जनरेशन है. आई कम फ्रॉम अ फर्स्ट जनरेशन वकील. नाउ फर्स्ट जनरेशन वकील में आपको और दो तरह के ग्रुप्स मिल जाएंगे. फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज एंड फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम वेरी एवरेज फैमिलीज. इन दोनों को भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? नाउ when you come from a Pushtani family where legal profession runs in the blood, ठीक है, what is the direct advantage? एक नेम है, लेगेसी है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि क्लाइंट्स हैं, ऑफिस है, लाइब्रेरी है, राइट? विच इज वेरी एक्सपेंसिव टू सेट अप. A law library is more expensive than a scientific library, by the way. Each book runs into lakhs. क्योंकि लॉ की जो पुस्तकें कम बिकती हैं, सो पब्लिशर्स के प्रॉफिट मार्जिन्स ज्यादा होती हैं. सिंपल. So it's very difficult to buy those books if you're a first generation litigator and you're trying to set up your practice. Okay? But जो जिनको ये ऑलरेडी मिला है, उनके लिए तो ये सारे expenses गए. And they have to focus only on building existing set of clients or retaining those clients. Right? Now, when this happens, the fight for the first generation litigator is real. The struggle is real. But in the process, आप जितना सीखते हैं इस संघर्ष में, it is irreplaceable. जो कॉन्फिडेंस आपकी होती है कोर्ट में, क्योंकि आपने जो भी किया है आत्मनिर्भरता से किया है, it is very different. And the best example you must know is that in the legal profession, जितने सारे stalwarts हैं या बड़े दिग्गज हैं जिनको हम पूछते हैं, they've all been first generation litigators by and large. Nani Palkiwala was a first generation litigator, right? These are all people who have come up the hard way. In fact, he had a stammer. He overcame that and became a fantastic public speaker, right? So, when you try and equalize every possible situation, you're playing with probability and you're playing with chance. And that is bound to have consequences, which means first, the incentive to work harder and perform comes down. Second, जब कोई आउटसाइडर एक एस्टैब्लिश सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश करता है बाहर से, एंड वो अपने स्किल के बेसिस पे करता है, with every success that he achieves, he actually changes the system. क्योंकि सिस्टम को रीवैल्यूएट करना पड़ता है, हम इन लोगों को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे. It has to think hard. And then that change is more lasting. As a first generation litigator, I should also tell you this. While sometimes आपको ये लग सकता था when you were struggling or when you were in your initial years, अरे these people, the judges know their names because they are all children of judges or lawyers. The judge doesn't know my name. When you appear after a point and the judge knows your name because of the work that you have done, कोई आपसे छीन ही नहीं सकता है कि आपका जो recognition है आपके पिताजी की वजह से है या माताजी की वजह से है. Everything there is because of your hard work, of course, apart from destiny and everything else. So I don't think you should try and equalize outcomes, whether on a gender basis or on a group basis. That is interference with the natural scheme of things. Struggle is part of nature to a significant extent. It is through struggle that you learn to eat, because the first morsel that goes in creates trouble inside the digestive system, which is being used to having liquid food. And that pain creates a certain reaction and strengthens the system. You're telling me that what is natural to your body, you want to eliminate in the society. I don't think that works. Has India benefited from colonization in terms of personal liberty? Absolutely not. Because I genuinely believe that
this question is problematic because of its factual inaccuracy and historical inaccuracy. When someone makes the statement that the Hindu society prior to its colonization did not have individual dignity or fundamental freedoms and free speech and expression, it is not a matter of opinion, it has to be a matter of fact. ये आपको establish करना पड़ेगा प्रमाणों के द्वारा, right? And we are repeating the Western trope and stereotype when we say that prior to Westernization and colonization, the concept of equality or the concept of gender justice or the concept of individual dignity did not exist. No, that's not true. But please realize that Western values are not universal values. Every culture has its own unique experience. Okay? The point that we must perhaps try and understand is a culture which is fundamentally polytheistic in nature is much more open to free speech and expression than a monotheistic culture. Right? Because if religion had more value in the past, which is the case, and if there was more freedom in terms of religious thought, how can there be less freedom when it comes to non-religious thought? Second, apart from polytheism, if there also existed the concept of a feminine divine, where you see divinity in the feminine side as well. So apart from Shiv, you also see a Shakti. Clearly, there is respect for the non-male gender as an equal and as an equal in its own right. ये कहना कि औरतें मर्दों के मुकाबले या उनके बराबर कर सकती हैं, itself is a sexist statement. Because then मापदंड आप बन जाते हैं. ये रिकॉग्नाइज करना कि दोनों आइडेंटिटीज के अपने खुद के स्ट्रेंथ्स होते हैं और किसी को दूसरे के साथ तुलना उसके कंपैरिजन को करना ही नहीं चाहिए. It's a very different thing altogether where you respect the difference. That's one. Two, take a look at how we have pursued our arts and how open and free we have been in that sense. It's very difficult to argue that this could have been possible in a repressive society. But हर society के red lines होना चाहिए. That is very important. क्योंकि जब तक वो लक्ष्मण रेखा खींची नहीं जाती है, moral values का पतन ही होगा. Culture को बचाए रखता है conservatism, not liberalism. This is the biggest argument to be made for a conservative side. I am not saying liberalism is bad, लेकिन एक core identity को बचाना जो है, वो उसका जो दायित्व जो है वो कंजर्वेटिव निभाता है. तभी तो एक कम्युनिटी की जो बेसिक आइडेंटिटी वो कंटिन्यू हुई जाती है. अगर आपने लिबरलिज्म को पूरी तरह से अपना लिया तो एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन के वैल्यूज के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं होगा और परिचय में भी कोई रिलेशनशिप नहीं होगा. तो 3 पीढ़ियों के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके रूट्स क्या हैं, आपके जड़ क्या है, वो पूरी तरह से मिट जाएंगे. So liberalism is important, but in incremental nature, which is small steps and staying within the tradition. Conservative is important to the extent that it does not kill forward movement. Okay? पूरी तरह से ये सही नहीं हो सकता है और पूरी तरह से वो भी सही नहीं हो सकता है. लेकिन at the end of the day, बीज की रक्षा कौन करेगा? Conservative ही करेगा, क्योंकि उसका कार्य ही यही है. His commitment is to the tradition. The tendency to celebrate Western values and liberal values on their own, saying that diversity is great, this is great, that is great, without asking why, to what end, ये किस चीज को बचा रहा है, ये सवाल करना जरूरी है. अगर आप केपी जायसवाल, बीएस अग्रवाल, पीवी खाने और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिनके कार्यों को अगर आप पढ़ेंगे, the first thing that you will end up realizing is a free spirit, a democratic spirit, an enlightened public. These were the pillars of even monarchies. राजा भी अपने आप में पूरा नहीं है when it comes to wielding of power. अगर राजा के पावर में इतने सारे checks and balances हैं और इतने सारे रोक हैं, which is as part of a monarchy, and when you read the concept of how monarchies operated in the West, revolutions have happened only because of this, because the monarchy was fundamentally tyrannical. How many such revolutions have you seen in pre-colonial Hindu Bharat which say that because of the tyrant,
जनता उठ के तलवार उन्होंने उठा लिया। ये कितने जगह पे हुआ है? क्योंकि सोशल कॉम्पस और मॉरल कॉम्पस को एक जगह पे रखने का काम सिर्फ राजा का नहीं था। You had entire groups doing this. That is why when democracy is celebrated in its entirety, we don't realize Europe needed a democracy because its monarchies were tyrannical and despotic. And they did not trust their royalty anymore. आज के डेट में केरला में जितने भी या त्रिवेंद्रम में जितने भी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं, उन सबको बनाया ट्रेवंकोर रॉयल फैमिली ने। Same is the case with Mewar. Same is the case with Kashi. Same is the case with Odisha, where the Gajapati was the ruler. Because Raj Dharma, as part of Hindu philosophy, is contingent on welfare of the people. The Raja does not have a special place, except for the fact that he is a public servant. When a monarch is treated as a public servant, it is proof of a democratic spirit in existence without the creation of a democratic institution. जब राजा को उखाड़ने की बात आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आपको उस सिस्टम से भरोसा उठ चुका है, आपका निकल चुका है। That's why you needed a French Revolution. That's why you needed a Russian Revolution. Where have such revolutions happened in Bharat? They have happened only under the Nawabs, in Telangana and in other places, not otherwise. You will test a system not on the basis of what you think it represents, but whether it gets the job done. अगर किसी समाज के लिए कोई सिस्टम काम कर रहा है, उसके साथ छेड़खानी करना या उसका मूल्यांकन करना बेकार हो जाता है, क्योंकि उस समाज के लिए वो सिस्टम काम कर रहा है, राइट? अगर वो सिस्टम काम करना बंद कर जाता है तो अपने आप वो सिस्टम उखड़ जाता है, राइट? Imagine your princely states continue right until 1950, right? What does it show? And all the major monuments, public facilities, libraries, hospitals in all of these 500 princely states were built by the families. Okay, so I refuse to buy this argument. And let's come to the question of blasphemy. गोहत्या, ब्रह्महत्या एंड देवनिंदा या ईशनिंदा, इन तीनों पे रोक लगना जरूरी हमने समझा है, बिकॉज वी बिलीव दैट दे रिप्रेजेंट द पिनिकल ऑफ अ सिविलाइजेशन। आप ब्राह्मण को एक जाति के नजरिए से देखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आपने ये समझा कि ब्राह्मण जो है हमारे ट्रेडिशंस के जितने भी उच्च कोटि के जो नॉलेज ट्रेडिशंस है उसको बचा रहे हैं, एंड जो प्रैक्टिसिंग ब्राह्मण्स हैं, जो वैदिक हैं, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि ये एक नॉलेज ट्रेडिशन को बचाया जा रहा है। और अगर आपने ये मान लिया कि वेद आपके नॉलेज की चरम सीमा है, देन जब आप उसको खत्म करेंगे या उनको मारेंगे तो उसके साथ एक पूरी जो पीढ़ी है या जो एक पूरा संप्रदाय मरता है। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ, assume for a moment that your nuclear scientists, if they are killed, it has much more ramifications than assume for a moment a normal engineer. Right? They're important for security, they're important for multiple reasons. They are your crucial knowledge builders for multiple reasons. So that's one. Second, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम है रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण में, आपको लगता है that the cow represents the pinnacle of the sattva-gun because of its soft nature. When you think of Hindu representation of time, it is in the form of a cow. Satyayug, ये जो cow है, it is standing on 4 legs. Okay? Tretayug, 3 legs. Dwapar 2, Kali में 1. If time itself is being represented, और वेदों को भी आपने, because it's 4 and therefore you think of it as a representation of the cow, it is the product of your lived experience. Plus एक fundamentally agricultural society में ये जो पशुधन है बहुत ही बड़ा धन है. People cry when the cattle is dead, as if it's a family member which has died.
That is the nature of your attachment to it. So I don't believe that we need to judge our practices on the Western angles. Now let's come to the final issue of blasphemy. We want to be able to say that we are so open-minded that blasphemy हमारे अंदर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर नहीं है. आप किसको प्रूव कर रहे हैं कि आप ओपन-माइंडेड हैं? एंड ये प्रूव करके आपको मिल क्या रहा है? इन द प्रोसेस ये एक तरफा रास्ता बन गया कि आप ओपन माइंडेड हैं तो आपके खिलाफ ये द्वेष हो सकता है, लेकिन वो ओपन माइंडेड नहीं है और आप कुछ बोल नहीं पाएंगे. नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, जो गाय की रक्षा करेगा वो अपने देवों की रक्षा नहीं करेगा. ये क्या लॉजिक हुआ? राइट? सो क्रिटिसिज्म इज ओके. दो दर्शनों के बीच में अगर लड़ाई होती है, दार्शनिक लड़ाई होती है, दैट्स स्टिल ओके. बट जब दूषण पे बात निकल जाती है या फिर देव निंदा पे बात आ जाती है, उस पे तो लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी. एंड as a community that has suffered 2 waves of colonization, you must preserve the right to preserve blasphemy as a part of your practice. वरना फ्री स्पीच के नाम पे रोज आपकी संस्कृति का मजाक उड़ाया जाएगा और आप ये कर नहीं पाएंगे. It's almost as if you're entering a boxing match with one hand tied to your back. And this is a boxing match where your life is at stake.